So, hello everyone. Hello everyone. So I got a new haircut. I don't know how many of you are attending for the first time. So it might be different. So I was just seeing my hairs here. So hello everyone. So let me welcome some of you. So hi Anisha, Anushika, Bharti, hi Bidisha, Devasmita, hi Dr. Monica, Hiba, Jagriti, Kavita, Kripa, Mehek, Maria, Namrita, Naina, Sakshi, Uzma, Vatsala, Deepa, Deepti, अरे और I'm not able to scroll. Oh, Uzma, Vatsala, Deepa. Hello everyone. I can see some hello, Vidisha. Hi. So good to see you all. So let's start our Q&A session. So let me first take the questions. Till then you start writing your questions in the Q&A box and I'll start taking them. Hi Anushka, Deepti. So let me start the questions which are already filled in the Google form and then we'll start taking the live questions. So first question is from Pushpa. फॉर्मूला मिल्क देते हैं बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं करता तो अगर बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो इसका पीछे रीजन ये हो सकता है कि या तो आपका बॉटल बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस है बेबी को बहुत टाइम हो गया है बच्चा बॉटल के साथ कंफर्टेबल हो गया है इसलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता अगर आपका मिल्क सप्लाई अच्छा नहीं है आपका मिल्क सप्लाई बहुत लो है तो ऑब्वियसली बात है बच्चा कैसे ब्रेस्ट फीड कर पाएगा अगर उसको मिल्क अच्छे से नहीं मिल रहा है अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई अच्छा है लेकिन अगर आपका फ्लो कम है तो उसकी वजह से भी बच्चा लैच नहीं करेगा अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई अच्छा है आपका फ्लो भी अच्छा है लेकिन अगर आपकी लैचिंग टेक्निक्स अच्छी नहीं है तो भी ऐसा होगा तो पहले आपको तीनों चीजों पे काम करना है मिल्क सप्लाई के ऊपर मिल्क फ्लो के ऊपर और अपनी लैचिंग टेक्निक्स के ऊपर तो बेबी आपका लैच करने लगेगा नेक्स्ट इज मैं इधर आई विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट बॉक्स ऑल्सो नहीं तो बहुत ऊपर चले जाते हैं फिर मिलता नहीं है दीप्ति आपका भी क्वेश्चन यही था लैचिंग नहीं करता तो मैंने अभी आप जो तीन चीजें बताई हैं आप उस पर वर्क करोगे नेक्स्ट है कृपा माई मिल्क सप्लाई इज रिड्यूस्ड आफ्टर 3 months of breastfeeding good question kripa so what happens at 3 months there is a growth spurt so that time if you have already feeling low milk supply in the beginning from the beginning of your first month or second month during third month babies have growth spurt so they tend to take more frequent feedings so mother feels that my milk supply has gone down so for you Kripa if you're feeling that after 3 months of breastfeeding your milk supply is going down so first check your baby's weight gain if in 1 week your baby is gaining around 150 grams per week then your milk supply is not less it is perfectly fine so first check for 1 week and see if the baby is still not gaining 150 grams in a week, then it might be a low milk supply issue. So you need to check. But if your formula milk is increasing and baby's weight is still not increasing, that means that is an established case of low milk supply. So first you have to see whether it is really a milk supply issue or not. So this way you can check, Kripa. दीप्ति सेज कि बेबी लैच नहीं करता मिल्क सप्लाई भी नहीं है इसीलिए तो बेबी लैच नहीं कर रहा है ना दीप्ति अगर मिल्क सप्लाई होता तो बच्चा लैच कर जाता अगर मिल्क सप्लाई नहीं है तो पहले आपको मिल्क सप्लाई पे ही काम करना है तभी आपका बेबी प्रॉपरली लैच कर पाएगा ठीक है yes Deepa I'll be speaking in English and Hindi if you ask me question in Hindi I'll reply in Hindi if you put your question in English I'll reply in English आप हिंदी में क्वेश्चन लिखोगे तो मैं हिंदी में रिप्लाई करूंगी अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिखोगे तो मैं इंग्लिश में रिप्लाई करूंगी Naina, low milk supply. My baby is 2.5 months old and he is on 50% formula. How to shift to exclusive breastfeeding? So now since your baby is on 50% formula, you have to try to feed your baby frequently. When you start feeding the baby frequently, along with that few more things like your water intake, you have to do oil massage and the warm compress. Third, galactogogues. If you are not taking any galactogogues, start taking lactomagic powder and Morico tablets. That works very well. So, who opened this code, Baba? Vatsala? Don't do all this. You're just wasting time here. What is the use of the whiteboard, Vatsala? Please don't open the whiteboard. Okay, so yeah, so Naina, I was telling, so if you are not taking any galactogogues, start taking lactomagic powder and Morico tablets. This will help you to improve your milk supply.
And along with that, you need to check your baby's weight. So if your baby is 2.5 months old, the baby should gain around 150 to 200 grams per week. So by following all this, start taking your baby's weight on day 1 and day 7, and follow all these tips and see whether once the baby's formula starts decreasing and baby's weight start increasing, that means you're on the correct path. Vidisha, doctor, I have latching issues. How to solve this? So first of all, latching, like what kind of issues? Do you feel painful latching, or do you feel the baby is feeding for a longer time, or is the baby not latching at all? So first, Vidisha, you need to tell me about it. Uzma, facing low milk supply and also very low in the right breast, and how to give skin to baby to increase supply. So for skin to skin, whenever you're burping the child, at that time, you open baby's clothes and open your chest and keep the baby skin to skin while you are burping the child. If you're already a breastfeeding mother, then during breastfeeding itself, you can open baby's clothes also from the front and keep the baby skin to skin while you are breastfeeding the baby. So this way, Uzma, you can do skin to skin. Now, talking about facing low milk supply and also very low in the right breast. So if you are facing low milk supply, I just answered Bidisha about it. No, I answered whom? I answered Nayana. So please keep listening to the answers which I am telling for the mothers. For low milk supply, you have to work on demand, increase your demand. If you are a breastfeeding mother, try to feed more frequently. If you are a pumping mother, have your pumps properly. And second thing is to have water intake. So have at least 3 liters of water. Massage and the compress. Take lactomagic powder, Morico tablets. Also, you need to have skin to skin and check your baby's weight. So your baby's age is not mentioned. So you need to check your baby's weight and also keep a track of how much formula milk you are giving. So this way you will be able to solve your milk supply issue. And for all the mothers, when I'm giving you tips for improving milk supply, please just work 1 week alone and see. If it is working for you, then you can keep moving. But in 1 week, if you're not seeing proper results, then please don't wait for everything to settle by its own. Just reach out to us. We'll give you customized plans for improving milk supply. Right now, from a common platform, I can give you the general guidelines. Next is Kripa. My baby's weight in 1 week was 100 grams. So Kripa, whenever I ask you something to mention, please mention your old message, copy that, and then you mention so that I know what was the context behind it. So what does that mean, Kripa? You need to just have both the questions together so that I can answer it. Meenal. Hello, ma'am. Does consumption of oatmeal really increase the milk production? Always remember, just eating something will not help to improve your milk supply. You need to work in a holistic way. Your water intake, your flow issues, your emotional issues, tracking everything, your galactogogues, everything, and most importantly, dependent supply. All these things, once you do properly all together, then only you can see the improvements. साक्षी, मैम मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रही हूँ. मेरी बेबी 4 महीने की हुई है आज. मेरी बेबी स्टार्टिंग में अच्छे से फीड करती थी. जैसे उसने फीड लेना कम किया तो ब्रेस्ट मिल्क कम हो गया. अब आई एम टेकिंग मेडिसिन बट मिल्क सप्लाई पहले से इम्प्रूव हुआ है, बट वो बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं लेती. जैसे ही फीड का ट्राई करो वो इरिटेट हो जाती है बहुत ज्यादा. तो देखो 4 मंथ्स के बेबी को आप ब्रेस्ट पे लाने के लिए अगर अभी ट्राई करोगे और बच्चा इरिटेट हो रहा है, तो सबसे पहले तो साक्षी आपको परेशान नहीं होना है. ठीक है, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते जाओगे तो बेबी आपका लैच करने लगेगा. आप परेशान मत हो. मैंने बहुत सारे बड़े बच्चों को भी देखा है लैच वापस करते हुए. आपको यहाँ पे बस पेशेंटली करना ये है कि जब भी आप उसको फीडिंग करा रहे हो, चाहे आप बॉटल दे रहे हो, चाहे आप कटोरी चम्मच या आप पलाडा से कैसे भी फीडिंग करा रहे हो, आप हर बार उसको ब्रेस्ट पे लेने का ट्राई करो, लेकिन बहुत ज्यादा पुश मत करो. 2 मिनट 5 मिनट, जैसे ही बच्चे ने रिफ्यूज किया छोड़ दो. अपने बेबी को आप जो भी देते हो वो दे दो और अपने ब्रेस्ट को आप पंप कर लो. अगर बच्चा आपका 8 बार 10 बार फीडिंग लेता है तो हर बार आप ट्राई जरूर करो. आप लोग क्या करते हो, 1 बार 2 बार ट्राई करते हो, बच्चा ने रिफ्यूज किया और आप लोग परेशान हो जाते हो, मेरा बेबी तो लैच ही नहीं कर रहा. अरे जब आपको 10 बार, आपकी अपॉर्चुनिटीज है ना, देखो आपको 10 बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप हर बार 10 बार ट्राई कर लो. नहीं आया तो आप पंप कर लो. लेकिन ये मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप रेगुलरली ये चीजें करोगे तो बच्चा आपका 1-2 बार भी ब्रेस्ट पे आया तो बस वहां पर हमारी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी. वहां आपका भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आप भी उसको जब रेगुलरली ट्राई कराओगे तो बच्चा वापस ब्रेस्ट पे आ जाएगा. सबसे पहले से डिप्रेस्ड मत हो. अगर डिप्रेस्ड हो गए तो कैसे काम चलेगा.
वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके लिए भी जरूरी है, आपके बच्चे के लिए भी जरूरी है। इतना अगर डिप्रेस्ड रहोगे तो कैसे करोगे चीजें? अभी तो बहुत लड़ाई है भाई, अभी तो बच्चे इतने छोटे हैं, अभी तो इतनी चीजें करनी है, बच्चे को बड़ा करना है। अभी से डिप्रेस हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा साक्षी? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दीप्ति, 3 मंथ्स के बाद भी बेबी लैच कर सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। Shivani, hello ma'am, my baby is taking breastfeed but at night. He's very cringy and don't sleep on the bed. He's full night sleeping in my lap. Okay, so for this, what you can do, when your baby's used to the lap, then you can have a soft pillow and you can latch the baby by putting the baby on the soft pillow, and you can feed the baby in side lying position. So in that way, the baby will feed on the breast and the soft pillow will be like your lap. Once the baby sleeps, then you can just remove the baby and can sleep with the baby. And suppose the baby gets up again, you can just put the baby on the breast and you can sleep. So basically, this is a kind of a thing. But when we see that when the babies take the mother as a pacifier, it happens that way. But what I feel that it's okay, that doesn't happen for so long. Basically, these babies do it specifically during their cluster feedings or during their growth spurts. So this is a small phase. It will, don't worry that it will keep lasting for long, Shivani. It is a matter of few days. Once the baby's growth spurt is gone or once the baby's cluster feeding is gone, the baby will not do this. So that way you can work on it. So for now, the recommended thing is have the baby latched in side lying position and keep a soft pillow and let the baby sleep on that. Next is Deepa. My baby is 1 month old. Once in a day, I feel my breast is dry and automatically my supply increases. How to maintain supply throughout the day? So if you have to maintain your supply throughout the day, first of all, you need to do oil massage on the breast and then warm compress. Second thing, you need to have a constant dosage of lactomagic powder and Morico tablets for few days. Once the supply is established, then you can start with 3 times and then you can come to 2 times, then 1 time, and then you can gradually stop. This way, your milk supply will be regulated. Priyanka, low milk supply. For low milk supply, I've already answered. Again, I'm answering. Water intake, improve your demand for improving your supply. Third thing, do oil massage and the warm compress. Fourth, take lactomagic powder and Morico tablets. Fifth, keep skin to skin contact with your child. Sixth, check your baby's weight and keep a track of formula intake. So Uzma says, can you please write name of galactose? It's not galactose. It is called as galactogogues, the foods which are for improving the milk supply. So there are many foods to improve the milk supply. So I'm just typing the name of the powder which I recommend. So that is lactomagic powder and Morico tablets. I've written it in the chat box. अरे आंसर करने में ना नीचे चला जाता है. Uzma. हाँ, Uzma, I've written in the chat box. Next is Maria. My baby is feeding only on one side, left side. She is not feeding. Then I have to pump. Yes, correct. So if your baby is feeding only on left side and the other side she is not feeding, so what you will do every time when your baby is hungry, you try to put the baby on the side where she's not latching. Once she refuses, take the baby to the side where she's comfortable. Once she finishes or when she's little drowsy, again shift the baby to the side where she's not latching. Even after doing this, the baby doesn't latch, then you continue the side where she's comfortable. Other side you can pump. But for every feeding session, you have to try starting of the session and mid of the session. If you keep doing this, Maria, the baby will start latching on the other side also. Krupa. Ma'am, please repeat the supplement that you have said just now. I have written it in the chat box, Krupa. Next is Namrata. My baby is 45 days old and weight is 4.29 and height is 58 centimeters. Is it an ideal weight and height? So Namrata, you have to tell me your baby's birth weight. Then only I will be able to write. So copy this and then you write your baby's birth weight so that I can relate it to it. Anushka Jain. मेरी दूसरी प्रेगनेंसी है, फ्लैट निपल की वजह से फर्स्ट बेबी भी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाई थी, अभी मुझे 8th मंथ चल रहा है. वेरी गुड. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस अनुष्का, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और ये अच्छी बात है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सीखना चाह रही हैं. सबसे पहली चीज तो भूल जाइए कि फ्लैट निपल्स के साथ बच्चे को फीड नहीं करा सकते. अभी आपकी 8th मंथ की प्रेगनेंसी है, आप हल्का सा हाथ में घी लेकर के
ब्रेस्ट को रोल कर सकते हो। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये फ्लैट निपल है तो बच्चा लैच नहीं कर पाएगा। आपका बेबी, और आपको एक और चीज करनी है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिल लो और उनको बोल दो कि मेरे बच्चे को डिलीवर होते बाद सबसे पहले आप मेरे ब्रेस्ट पे जरूर लगा दीजिएगा। आप पहले फॉर्मूला मिल्क मत देने दीजिएगा किसी भी नर्स को। जस्ट टॉक टू योर, अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर लेना। देखो गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बात उनसे भी कर लो, लेकिन अपने पीडियाट्रिशियन से पहले, डिलीवरी से पहले मिल लो और उनको ये चीज बता दो कि मेरे पहले बच्चे में मुझे दिक्कत आई थी, मुझे इस बार अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, डिलीवरी के फौरन बाद मेरे बच्चे को ब्रेस्ट पे मेरे लगा दीजिएगा। आधे घंटे के अंदर ही ये गाइडलाइंस हैं जो बच्चों को ब्रेस्ट पे लगाना चाहिए। अच्छी चीज है कि आप अभी प्रेग्नेंट हो, आप ये चीज अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर लो। सेकेंड चीज आपको ये करनी है कि जब बेबी आपका डिलीवर होगा तो आप बच्चे को ब्रेस्ट पे खूब अच्छे से लगाओगे, क्रॉस क्रेडल होल्ड को फॉलो करोगे, जिसपे आप ब्रेस्ट को नीचे से ऐसे पकड़ के दबाओगे तो जो एरियोला है उसका पाउट आ जाएगा बाहर और बच्चा उसको लैच कर लेगा। ये बिल्कुल भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो कि फ्लैट निपल के साथ बच्चा लैच नहीं कर पाएगा। बहुत परफेक्टली लैच कर सकता है, बस आपको टेक्निक्स पे काम करना है। अनुष्का। Priyanka, how to increase low milk supply? So already I'm answering it again and again, but I'm again mentioning you. So number one, improve your demand to increase your supply. Second, take water intake, increase your water intake. Third, do oil massage and warm compress on the breast. Fifth, take lactomagic powder and Morico tablets. Fifth, you have to do skin to skin with your child. Sixth, check your baby's weight weekly. Seventh, check your baby's formula intake. Formula should come down and baby's weight should increase. That's why you're going correct. You're doing that. Uzma Memicon, no, it's not Memicon. It has got preservatives added. Please don't use that. What I have mentioned, I have written in the chat box. Kavita, ma'am, my baby latches only for 5 minutes and sleeps off. Again, does the same thing many times. My baby is 1 month old. I think my milk supply is less. Taking Lactomagic, Morico and tablet Domstal. Okay, so Kavita, what you need to do if your baby is sleeping for like latching for 5 minutes and sleeping off, then at that time you just remove the baby from the breast. If the baby is still sleeping and not getting up, then you hand express or pump your milk and keep it aside. Now, if the baby gets up, then at that time you can shift the baby to other breast. Basically what happens, 1 month babies, they have a sleep cycle of 14-15 hours. So they are not very active. They are more active in the evenings and in the night. But daytime, they just like sleep mostly. So that's why it's okay. It's very normal for babies to behave like that. In that case, what you can do, you can latch the baby, and once the baby sleeps, you can remove the baby and pump or hand express. In that time, if the baby gets up, you can take the baby on the other breast. So this way you can move, keep moving. As the baby will slowly grow, the baby will start coming on the breast properly with proper latch. नेक्स्ट इज हिबा काजी। माय हाय, मेरा बेटा 3 महीने का हो रहा है बट अभी तक एक भी बार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किए, मिल्क भी कम है। तो हिबा देखो, मिल्क अगर कम है तो बच्चा लैच नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। बच्चे को पेट भर के दूध चाहिए, अगर ब्रेस्ट में दूध नहीं है तो बच्चा कैसे लैच करेगा। तो पहले आप मिल्क सप्लाई को बढ़ाने पे काम करिए, साथ साथ में आप बच्चे को ब्रेस्ट पे ट्राई कराते रहिए। जैसे जैसे आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ेगी, बच्चा लैच प्रॉपर्ली करने लग जाएगा, फिर आप लैचिंग के ऊपर और अच्छे से फोकस करके इस चीज को ठीक कर सकते हो। सोनाली, हाय मैम। हाय सोनाली। कृपा, मैम, by pumping milk helps to increase milk supply? If yes, how to do? So Krupa, yes, it helps. But if you're a breastfeeding mother, your baby is already latching on the breast, then you don't need to pump. If you're facing low milk supply, then you can pump after breastfeeding your baby. But you can just pump if your baby is already on the breastfeeding, then you can pump after the breastfeeding sessions to improve the milk supply. But if your baby is not at all latching, then obviously you can still increase the milk supply by pumping. Zarana, my baby is 8 months old. He never takes initiative to feed. I am pumping mother. पहले वो नींद में लैच करता था, अब वो एक्टिवली स्लीप होता है तो रोने लग जाता है, और इसकी वजह से मेरी सप्लाई बहुत कम हो गया है, बढ़ी नहीं रहा है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मुझे अब उसको लैच करवाना है पर नहीं करता, मैं क्या करूं। 8 मंथ्स बेबी, वो इनिशिएटिव क्यों लेगा जराना। 8 मंथ्स के बच्चा तो खाने लग जाता है। अगर उसने पहले ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया है तो उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है ना कि माँ के ब्रेस्ट से भी दूध पी सकते हैं, तो वो कैसे इनिशिएटिव लेगा। तो आपने जैसे बोला कि पहले वो नींद में लैच कर लेता था, अभी वो क्योंकि ऑब्वियसली 8 महीने का हो गया है तो रात में नींद अच्छी लेता है,
तो रात में जब नींद अच्छी लेता है तो अब आप उस समय उसको फीड कराओगे तो वो लैच नहीं करेगा। तो पहले, और आपने बोला कि आपका मिल्क सप्लाई भी कम हो गया है, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा कि पहले मिल्क सप्लाई को थोड़ा इम्प्रूव करो। 8 महीने के बच्चे को ब्रेस्ट पिलाना इतना आसान अभी नहीं है। मिल्क भी अगर कम है तो बच्चा कैसे लैच करेगा, सोच के देखो। तो पहले मिल्क सप्लाई पे वर्क करो, अभी मैंने कई चीजें बताई हैं उनको फॉलो करो, मिल्क सप्लाई को थोड़ा इम्प्रूव करो, फिर लैचिंग का ट्राई करो, ठीक है। तब तक आप पंपिंग करके मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हो जरा ना। नेक्स्ट, Next is Shivani. Ma'am, is sideline breastfeeding position safe for under 1 month baby? Everyone says milk will go in the ear canal or nose. So I know that people say, so what you can do while you are feeding the baby, keep a small pillow just below the baby's head. So basically what happens once the babies feed, if they're in the flat position, then there are chances of the milk going back. But if their head end is little up, then because of the gravity, the milk will not go up. It will come down only. So no issues with that, Shivani. You can breastfeed the baby, but always focus on the position of the baby's head. Vidisha, doctor, I have milk supply, but my nipples are sore. So if your nipples are sore, this is a clear thing that it is a latching issue and also flow issue. If there is less flow, then the babies will obviously try to latch vigorously, and then you will feel sore. And for if you are, and also because of the latching issue, so basically the latching should be deep so that you don't feel any pain. The mother's nipple should go to the soft palate of the baby, and the nipple will be safe and secure. So that way you have to work on your latching and your flow. Shruti, I am facing low milk. Okay, so Shruti, I have just given some pointers about low milk supply. You can just follow that. Namrata, my baby is 45 days old and weight is 4. Acha, birth weight is 3.7. So give me 1 minute. Birth weight 3.7. 45 days. So that is 6 weeks. 6 to the 12, 1.2. 7, 8, 9, 4.9. Oh, it is less little. So we needed around 4.9. I would have agreed for 4.7 or 4.6 also. But 4.29 is little less, Namrata. You need to work on your supply, flow, and obviously latching so that we can improve the baby's weight. Okay. Height is fine. प्रियंका, मसाज के लिए कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। एक ऑयल मैं भी इसमें लिख रही हूँ, डॉक्टर मिक्स का आता है मसाज ऑयल, आप इसको ले सकते हो। ये मसाज के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। ये आयुर्वेदिक और सिद्धा का प्रिपरेशन है, कुजाम्बू ऑयल, बहुत हेल्पफुल है। ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो इस तरह से आप अपना मिल्क का फ्लो से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नम्रता का हो गया, प्रियंका का हो गया। एकता, मैडम मेरे डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट से मिल्क लीकेज हो रहा था, बट अब 1 वीक के बाद ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट बहुत लूज हो गए। मैंने पाउडर टैबलेट सब यूज कर रही हूँ। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि ब्रेस्ट की टाइटनेस या ब्रेस्ट की लीकिंग ये शो नहीं करती कि आपका मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा है। जो टाइटनेस आपको फील होती है, जो लीकिंग फील होती है, वो सिर्फ आपका ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स बताता है कि वो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स अच्छा है, जो कि कॉमन है शुरू में 5 से 6 हफ्ते। कुछ मदर्स को थ्रू आउट ब्रेस्ट फीडिंग रहता है, कुछ मदर्स को कभी फील नहीं होता। तो इसलिए आप इस चीज को लेकर के परेशान मत हो कि पहले मिल्क लीक करता था, मिल्क बहुत अच्छा था, अभी मिल्क कम हो गया तो मेरा मिल्क सप्लाई कम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से, आपकी बॉडी आपके बच्चे के हिसाब से मिल्क बहुत अच्छा बनाएगी अगर आप प्रॉपरली डिमांड एंड सप्लाई की चेन को मेंटेन करोगे। तो एकता, आप जो भी कर रहे हो उसको प्रॉपरली करो। 1 हफ्ते का बच्चे का वजन लो और फिर देखो कि फॉर्मूला इनटेक कम हो रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, यानी आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। महक, लैक्टोमैजिक पाउडर और मोरिको टैबलेट कैसे लेना चाहिए? देखो, क्योंकि इसकी डोजेज अगर मैं बात करूं तो हर मदर के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि हर का मदर का मिल्क सप्लाई कितना है, कैसे है, ये हम कैसे बता सकते हैं। फिर भी अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपका फॉर्मूला मिल्क बच्चे का अगर आप 5 से ज्यादा बार दे रहे हो तो कम से कम आप 3 बार लैक्टोमैजिक और 3 बार मोरिको लोगे। अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क 5 से कम मतलब 4 बार या इतना दे रहे हो तो आप 2 बार भी लेकर के आपका काम हो जाएगा। Sonali, my relactation journey started by your consultation, ma'am. Only 10 to 15 milk is coming. My baby latches well. What to do, ma'am? So if your baby is latching well, then why are you expressing the milk and seeing how much is your milk supply?
If your baby is latching well, try to latch your baby frequently and check your baby's weight. That's all. Whatever milk is coming, don't try to take it out and see how much milk is coming. You just latch your baby. Your baby is coming on the breast. That is very good. Just try to latch the baby frequently and check the baby's weight and how much formula is decreasing per week. This way, you will be able to get your baby on the breast also. Also, your baby's weight will start increasing. Also, your formula milk will come down. Please don't express and see how much milk you're getting. This is not the correct indication of how much milk you're producing. 10 to 15 ml means there is more milk in the breast, because for a breastfeeding baby, the milk output with the pump is not the correct indicator of how much milk you're producing. Okay, Sonali? Avantika. Hi, ma'am. Hi, Avantika. Krupa. Ma'am, by pump milk to increase supply. If yes, how to do? Milk supply is very low. So, Krupa, if your milk supply is very low and you want to pump, then obviously if you're a breastfeeding mother, then you can pump after your breastfeeding session. If your baby is not coming on the breast, then you need to pump. But see, pumping will vary as per the baby's age, as per the baby's demands. So what I can recommend right to that you can pump at least 3 hourly or 4 hourly at the starting. And as per the progress, you can keep moving forward. You can add the power pumps into that later on as per the progress. अवंतिका, मैंने ब्रेस्ट पंप भी यूज किया पर मिल्क सिर्फ 1 से 2 स्पून ही निकलता है. तो अगर 1 से 2 स्पून हर ब्रेस्ट पंपिंग करने पे निकल रहा है अवंतिका, तो उसको रेगुलरली करती जाओ. हर बार अगर आपका 1 से 2 चम्मच आएगा और आप रेगुलरली करोगे, तो आप देखना, आप 1 हफ्ता भी अगर रेगुलरली करोगे तो आपका मिल्क हर बार पंप से ज्यादा आने लगेगा. लेकिन अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो आपको पंप में मिल्क कम आएगा, क्योंकि बच्चा अच्छे से अगर दूध पीने लग जाता है तो आपको पंप में मिल्क नहीं आएगा. अगर आपका बच्चा बिल्कुल लैच नहीं करता और आप फिर पंपिंग कर रहे हो, तो वहां पर अगर आपका 1 से 2 स्पून भी आ रहा है, आप इसको बस रेगुलरली करते जाओ. आप रेगुलरली करोगे तो हर बार आपके पंप में मिल्क बढ़ने लग जाएगा. दीप्ति, मैम डिलीवरी के जस्ट बाद मुझे अच्छा मिल्क सप्लाई था, फिर भी मेरे बच्चे ने लैच नहीं किया. अब हम बॉटल से फॉर्मूला मिल्क देते हैं, क्या ये बॉटल से ब्रेस्ट पर आ सकता है? एज बताओ मुझे. अप टू 3 मंथ्स 4 मंथ्स लाना सबसे आसान होता है. इससे ज्यादा है तो आ सकता है, लेकिन हमको उसके ऊपर अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी. तो अगर बच्चा 3 मंथ्स का कम का है तब तो 100% हम ला सकते हैं. इसके ऊपर है तो हमें अच्छे से मेहनत करनी होगी, लेकिन हाँ, हम बच्चे को ब्रेस्ट पे ला सकते हैं. Dr. Saima, my 40 days baby never latched. My supply is also low. How to work on this for baby to come on the breast instead of formula? So first of all, when you say that your milk supply is low and that is the reason your baby is not latching, so first of all, work on your milk supply and side by side, keep trying to get the baby on the breast. Your baby is just 40 days old. So there is a very good chance that we can get the baby back on the breast. So for milk supply issues, I have already answered and given tips on how to improve your milk supply. So I'm repeating it again. Increase the demand on your body to improve your milk supply. Improve your water intake. Do oil massage and warm compress. Take Lactomagic powder and Morico tablets. You have skin-to-skin contact with your child regularly. Keep the track of your baby's weight gain. Also keep a track of formula intake. If the formula milk is coming down, baby's weight is increasing, that means you are doing correct. Dr. Monica, which breast pump do you recommend? So I usually recommend pumps which are like wearable pumps, so that it becomes easy for the mother to pump. So wearable pumps, lot of them are available on Amazon, Flipkart. You can just go through that and see accordingly and order. The most common brands I have heard from mothers are using that Bum to Cradle and this Morrison and one more Health Sense. All these brands are fine. I have heard from the mothers, they tell that these brands are good. Datibha Lingdorf. Hello, ma'am, I'm having low milk supply problem. So for low milk supply, I am repeating again and again. You girls are not listening to my answers. So just watch the recording. It will be there tomorrow or day after tomorrow on my YouTube channel. So the recording of all the Q&A sessions are available on my YouTube channel. My YouTube channel, you can just type Dr. Tanima Singhal on YouTube and you will get my channel. Subscribe to that and hit a bell icon so you will get all the regular updates of the new videos which are coming there. So you can watch the recording if you have missed the initial part. Shruti, madam, could you repeat for low milk supply?
It's the same thing I was telling. If you have joined late, and next time join on time so that you can participate in the I do Friday Q&A sessions on at 7 p.m. So okay, I'm repeating it again, but now I will not repeat after this. You can watch the recording. So number one is improve your demand to improve your supply, improve your water intake, do oil massage and warm compress, take galactogogues like Lactomagic powder and Morico tablets, improve baby skin to skin contact with you, check your baby's weight weekly. Also, you need to keep a track of formula intake. If the formula intake is coming down, baby's weight is still increasing, you are going on a correct path. जागृति मैम मेरा बेबी 1.5 महीने का है. माई बेबी नॉट एट ऑल लैचिंग फ्रॉम डे 1 एंड मेरा मिल्क सप्लाई लो था एंड अभी तो बिल्कुल कम हो गया है. पंपिंग करके हार्डली 10-20 ml आता है एंड पंपिंग इज वेरी पेनफुल. क्या अभी मेरा मिल्क सप्लाई इम्प्रूव होगा एंड मेरा बेबी लैच कर पाएगा? तो सबसे पहले देखो जागृति, अगर हमको मिल्क सप्लाई को बढ़ाना है और बेबी अगर आपका अभी लैच नहीं कर रहा है, 1.5 महीने के बच्चे को लैच कराना हम वापस करा सकते हैं, लेकिन अभी शुरू में पंप करना होगा. और पंप आपको अगर पेनफुल हो रहा है तो इसका मतलब आपका फ्लैंज साइज ठीक नहीं है. आपने जिस कंपनी का पंप लिया है उनके कस्टमर केयर में बात करो और अपने फ्लैंज चेंज कराओ. फ्लैंज चेंज करके आप कंफर्टेबल हो जाएगा पंपिंग करना. आप रेगुलरली पंप से डिमांड करो, मिल्क सप्लाई इंप्रूव होगी उसके, और साथ साथ में बेबी को लैच कराने का ट्राई करते रहो. दीप्ति मैम ऑयल का नेम टाइप कर दीजिए. ऑलरेडी कर दिया है जी. प्रियंका ऑयल का नेम कर दिया है बच्चा. Maria, ma'am, in morning milk supply is good, but when I pump in evening, milk supply is very low. Why? Because in the night, there is a hormone called as prolactin, which is at the peak. That's why our milk output in the morning is better than in the evening. In the evening, the prolactin hormone is less, but it is normal. Please don't worry that evening में कम आता है, morning में ज़्यादा आता है. If you are working on improving your milk supply, just keep doing regularly. If you are doing this, milk supply will improve and the 24-hour milk in output will be sufficient for your child. Jagriti, I have low milk supply issue and I have already had a medicine from the local lactation, but still I haven't seen the work, seen the result. Can I still work on milk supply problem? Yes, Jagriti, and if you have already consulted a local lactation consultant and it didn't help, then please don't wait. Just reach out to the team tomorrow and get a consultation book from our lactation consultants. So we have 3 more lactation consultants in my team. They are very well and we have got very good results. So you can just reach out to them and get a lactation consultation scheduled for you, Jagriti. Priyanka, birth time weight is 2.6, now 1.6 month old or abhi 4 kg hai. 2.6, 1.6 month. So by 6 weeks, 6 to the 12. 1.2, 6.8. हाँ, वेट ठीक है प्रियंका. अगर बेबी को आप फॉर्मूला मिल्क नहीं दे रहे हैं, then your weight, baby's weight is very good. Anisha, does sideline feeding decrease supply? I have large breast. Is that a reason for low milk supply? No, it doesn't work that way, Anisha. महक सोलकर, मेरा बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता था लो मिल्क सप्लाई होने की वजह से. 7 या 8 फॉर्मूला दिन में लेता है. कैसे कितना लूं लैक्टोमैजिक पाउडर और मोरिको टैबलेट? 3 बार, 2 चम्मच दिन में 3 बार, मोरिको टैबलेट 3 बार. अनीशा, 10 और पहले 1 हफ्ता काम करिए. अगर मिल्क सप्लाई में आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपकी डोजेस वगैरह चेंज करने का या और किसी चीज में चेंज करने का जरूरत पड़ेगा. आप टीम को रीच आउट करके अपने लिए कस्टमाइज सोल्यूशन ले सकते हो महक, बल्कि लेना चाहिए. 1 हफ्ता पहले वर्क करो, नहीं इंप्रूव होता है तो टीम से अपना कंसल्टेशन लगवा लेना. अनीशा ऑलरेडी आंसर्ड. अवंतिका, मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है. थैंक यू अवंतिका. एक मैडम ब्रांड कौन सा यूज करना है? मैंने ये जो नाम लिखा है ना, इसी को ही आपको बस टाइप करना है. आपको ये मिल जाएंगे, लैक्टोमैजिक पाउडर, मोरिको टैबलेट्स. आप टाइप करोगे गूगल के ऊपर तो आपको मिल जाएगा वहां से. दीप्ति, नाइस सेशन. थैंक यू दीप्ति. अनीशा, 10 साइडलाइन फीडिंग. अरे अनीशा, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट मत करो. मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आप लोग के आंसर्स कर रही हूँ. आई कीप आंसरिंग देम वन बाय वन. इफ यू आर रिपीटेडली पुटिंग द सेम क्वेश्चन, that is not going to help. Okay. Namrata, my baby is 45 days old. For last 40 days, I was mixed feeding, but after 12th October, I am exclusively breastfeeding. Very good. Baby is sleeping well after feed. Is it a sign that baby is getting sufficient milk, or I should continue with mixed feeding? Weight is 4.9, 4.29.
Also, Namrata, please tell me what is the birth weight. So copy this full question. In the last, you put the baby's birth weight so that I'll calculate and will tell you is the weight gain fine or not. So anyhow, for 45 days, baby, you have to target 150 to 200 grams per week. Pinky, hi ma'am. मैम मोरिको टैबलेट एंड लैक्टोमैजिक पाउडर के साथ डॉमस्टल टैबलेट लेना कंपलसरी है क्या और ऐसा क्या यूज है? देखो, अगर आपको डॉमस्टल टैबलेट आपके डॉक्टर ने सजेस्ट की है तो उसकी जरूरत होगी, ठीक है। डॉमस्टल क्योंकि एक एलोपैथिक टैबलेट है तो मैं ऐसे जनरली आपको नहीं बोल सकती कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और आपको बोला है लेने के लिए तो उसकी जरूरत उनको लगी होगी, इसीलिए उन्होंने लिखा है। बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, आप ले सकते हो, लेकिन हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में लेनी चाहिए डॉमस्टल, क्योंकि वो एक एलोपैथिक टैबलेट। Pratibha, ma'am, how many times in a day to take lactomagic powder and tablet? Already answered. If your baby is taking formula milk, 5 or more, take it thrice. If it is less than 4 times, then twice. Anisha, does sideline feeding decrease supply? I have large breasts. Is that a reason? No, Anisha, I already answered. Why are you putting the same question again and again? No, Anisha, no. Nidhi, ma'am, oil name, please repeat. Dr. Mix Massage Oil. Dr. Mix Massage Oil. Kripa, my milk supply is reduced after 3 months. My baby is exclusively on breastfeeding. My baby's weight after a week was 100 grams. So after 3 months, if your baby should gain around 150 to 100 grams, try to maintain 150, but in any particular week, if it is 100 grams, it's fine. Next week, try to improve it. Avantika, मैम मेरे ट्विंस बेबी हैं जो टोटली फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंडेंट है। ब्रेस्ट पंप यूज कितनी देर करना रहता है और कभी कभी तो कुछ भी नहीं निकलता? देखो अवंतिका, अगर कुछ भी नहीं निकलता कभी कभी तो कोई बात नहीं, आप हर बार करते जाओ। देखो, आप ऐसे मान के चलो कि ये जो ब्रेन है, आपका ब्रेन है, ये आपके बच्चे के लिए किचन है, ठीक है। आप जब तक इसमें डिमांड नहीं करोगे तब तक मिल्क सप्लाई कैसे आएगी? किसी समय आपके ब्रेन अगर वो नहीं बना रहा, दैट्स ओके, जस्ट कीप वर्किंग। आप अगर रेगुलरली डिमांड देते रहोगे तो ब्रेन आपका 100% मिल्क जरूर बनाएगा, लेकिन आपको इसके लिए कंसिस्टेंटली काम करना है। आपने 3 दिन पंप किया, 2 दिन छोड़ दिया, वैसे काम नहीं चलेगा। रेगुलरली करोगे, रेगुलर टाइम इस पे करोगे, कभी 3 बजे कर रहे हो, कभी 4 बजे कर रहे हो, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो आप रेगुलर टाइम पे पंप करो, जिससे आपका मिल्क सप्लाई का डिमांड रेगुलरली जाएगा, उससे आपका मिल्क सप्लाई वापस आएगा। Namrata, my baby is 45 days old. For last 40 days, I was mixed feeding. हाँ ठीक है. Birth weight 3.7. 45 days. 4, 1.2. 6 weeks, no? 1.2. 3.7, 7, 8, 9. 4.9. So that's what we discussed, Namrata. Your baby's weight is little less. If your baby is on exclusive breastfeeding, what you need to do, after every exclusive breastfeeding, just see the color of the milk. If the color of the milk is thick white, that means your baby is not emptying your breast. So at that time, you can hand express or pump after feeding. And if this milk is less also, just keep doing it. And keep giving this milk to your child. And also follow the tips which I have given for improving your milk supply. And track for 1 week. Your baby should gain around 150 to 200 grams per week. After following everything for 1 week, if the baby starts gaining 150 to 200 grams, that's very good. If still the baby is not increasing that weight, please don't wait. Come back, come to us, have a consultation book from one of my consultants and get your issues resolved. Krupa, ma'am, after latching, you said to pump to increase the milk supply, but baby tummy is not full because of low milk supply. Can I give formula immediately? My baby is 2 months and 10 days, and thanks for your information. I am learning more points from you. So first of all, Krupa, very good. You're most welcome. And yes, you can give formula milk, but once you keep working on this process, your milk supply will start increasing. Also, you need to check the baby's weight. If you keep giving formula milk, but you don't track the baby's weight, then you might fall into the trap of formula. You need to increase the formula regularly. So if you keep tracking your baby's weight, and with decreasing formula, the baby's weight is still increasing, then you can definitely reduce the formula as per your baby's demand. Pinky, thank you, ma'am. Most welcome. अवंतिका, मैम आप कोई मेडिसिन बताइए ये मिल्क इंक्रीज करने के लिए। खाली मेडिसिन से मिल्क का सप्लाई इंप्रूव नहीं होगा, सब लोग ध्यान से सुन लो।
आपको साथ में और चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने अभी बताया है। सिर्फ मेडिसिन खाने से मिल्क सप्लाई इंप्रूव नहीं होगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। सोचोगे कुछ खा करके दूध बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे होता है? आपको मिल्क सप्लाई के लिए डिमांड सप्लाई, मसाज सिकाई, पानी का इंटेक, बच्चे के साथ स्किन टू स्किन, बेबी का वेट चेक, फॉर्मूला चेक, ये सब कुछ करना होगा। तब आप को जो आप मेडिसिन लोगे उससे मिल्क सप्लाई में इंप्रूवमेंट आएगा। खाली मेडिसिन खा करके मिल्क सप्लाई में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। Meenal, my breasts are always soft. Does it mean I have low milk supply? And I feel tingling sensation in the nipples after every 2 to 3 hours. It feels like कि milk आ रहा है breast में. So first of all, Meenal, if your breasts are soft, it doesn't mean that you have low milk supply. So forget if the milk is soft, if the breasts are soft. Second thing, the tingling sensation in the nipples is actually because of the oxytocin reflex, which is perfectly fine. You can just breastfeed your baby. And if it is very uncomfortable and your baby is not ready to feed, you can express the milk. Still, if you feel that tingling sensation, then you can apply little ice cube that will like numb the area and you will feel better. Krupa, thank you, ma'am. Most welcome, Krupa. Shruti, मेरा बेबी 1 महीने का and taking 4 times formula. How much medicine should I take? Twice. Start with twice and see. 2 times you take morning, evening, and Morocco tablets also, and see the baby's formula intake and the baby's weight. If it works, very good. If it is not working, reach out to the team, get a consultation booked for yourself, and have a proper customized protocols for you. Avantika, thank you, ma'am. Most welcome. Maria, in how much time duration we have to pump? So basically, first, if you have never pumped, then you start 4 hourly, then go 3 hourly. पिंकी कुंभार, मैम मेरा बेबी के बर्थ वेट 2.2 था एंड स्टार्टिंग में मिक्स फीडिंग देती थी, अब एंड लास्ट 15 डेज से एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ। अभी 45 डेज में वेट 3.5 ठीक है क्या? 2.2 1.4 3.4, हाँ वेट ठीक है। ठीक है बेटा पिंकी, वेट ठीक है, बस करती जाओ और बच्चे का वेट रेगुलरली लो। 150 से 200 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए हर हफ्ते। और तुम्हारा बच्चा क्योंकि बहुत कम वेट का हुआ था 2.2, तो कोशिश करो कि 200 से थोड़ा ऊपर ही बच्चे का वेट गेन रखो अभी, क्योंकि बच्चे का वेट क्योंकि कम था, बर्थ वेट कम था, तो अभी हमको थोड़ा वेट गेन उसका हमको ज्यादा टारगेट करना चाहिए। तो कोशिश करो 200 से 250 ग्राम अगर कर पाओ तो बहुत अच्छा है। Krupa, I was feeling very low. Now I feel positive about everything. That's very good, Krupa. That is the main purpose of doing these sessions. That's very good. Priyanka, मैम बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे रहे थे, बर्थ वेट 2.6 था और अभी 1.6 मंथ का है, वेट 4 kgs। तो सबके बच्चे 45 डेज के ही हैं, ऐसे कैसे? 3.84 kg ठीक है ना प्रियंका? मैंने अभी शायद कैलकुलेट करके बताया भी था। ठीक है। मीनल, ma'am, I pump and give milk to my baby, but she refuses to drink from palada or through bottle. She wants only my breast milk. But after 15-20 minutes, when I express the milk by my hand, I didn't see any milk. That's why I pump the milk. Does hand express consistently will increase the milk supply? So basically, Meenal, you need to create the demand. So for creating the demand, hand express and pump both work. But what happens, hand express, sometimes we are not that expert. We are doing hand express and if nothing is coming out, you pump and then you can do hand express. So this way you can have a combination of it. Datibha, thank you, ma'am. God bless you. Most welcome, my dear, and most welcome, and God bless you too. Maria, thanks, ma'am. Your session is very informative. You are most welcome, my dear. Thank you so much. Preeti, thank you. Most welcome, bacho. Anisha, thank you so much. Feeling positive already. Was very deferred as I crossed 4 months and felt hopeless. So don't feel hopeless. You have to just work on improving your supply, follow everything. Keep coming in these Q&A sessions. Be very positive. Be very strong. See, if you can nurture your baby during pregnancy, you can definitely do it now also. Okay? So just don't be hopeless. Don't be depressed. You need to just work. See, we just keep craving, nahi ho raha, nahi ho raha, nahi ho raha. It doesn't work. Nature can never go wrong. It is big. See, have you ever seen any other species other than humans facing low milk supply? Even dogs can feed their babies, Baba. Even cow, buffalo, they can make more milk for even humans to feed the humans. Why we are facing low milk supplies? Because we give this formula milk to our babies.
in the initial days. Nobody teaches us how to do proper breastfeeding. When the baby is born, everybody gives formula milk to the baby. Nobody helps us to get the baby on the chest. People will say 3 days you will not get milk. We also, because we don't know, we are new moms, we also believe in that. And that's why all these problems come in. So first of all, don't be depressed. You can revert the process by following proper demand and supply protocols and the other things. So I'm all here for you. I'll keep coming in these Q&A sessions, but it is better if you can have one-on-one consultations with the experts so that they can plan a proper session, proper protocols for you. If still you are doubtful whether it will help or not, then follow the general techniques, tips which I am following, giving you here. But it is better follow for 1 week and see. If it is working, it's very good. If not, then get a proper consultation appointment from our doctors. Enal. नहीं. Dr. Saima, how to hand express? Good. So hand express has got 3 tips, like when we call 3 steps. So you have to hold the breast in C shape. Suppose nipple is in the between, 3 fingers above, 3 fingers below. Hold the breast, then press, like you have to press the breast towards the chest, compress, press the breast, compress and release. So press, compress, release, press, compress, release. So that is the process, 3-step process of doing a hand express. How much time to breast pump? Now that will depend. So if you are following all the proper techniques which I have told you, then 10 to 15 minutes is more than sufficient. प्रियंका मैम, पंप करके 1 स्पून निकलता है तो मिल्क इंक्रीज हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस इसको रेगुलरली करती जाओ. Shivani, thank you Tanima ma'am, you have helped me with first child also, and this time I'm so confident just because of you. That's very good, Shivani. That's a good thing that I came to know that you came to me for your first child also. That's very good, Shivani. I'm so proud of you, Shivani. Just keep moving. It will be perfectly fine, dear. Meenal, my baby's birth weight is 3.5 kg. She's 1.5 months now, and her weight is 4.4 kg, and she's on exclusive breastfeeding. So 3.5, 5, 6, 7, 4.7. Actually, I needed 4.7. Right now, it is 4.4. So what I will say, Meenal, what you do after every breastfeeding, you just see the color. If the color is looking thick white, then hand express. That means this milk is, baby is not emptying the breast. Just hand express and or pump. And this milk will be very less. Sometimes you will not get also. But keep giving this to your child. Your baby's weight will increase. And follow the tips which I have given above of the things to improve further. All these things. Sonali, ma'am, my baby is 5 months old. Now I'm giving cow's milk to him. He takes less milk because I'm latching him regularly. That means I have milk supply increase. So first of all, Sonali, about cow's milk, I don't prefer giving cow's milk before 1 year. You need to talk to your pediatrician. If your pediatrician allows, then only please give cow milk. Otherwise, cow milk is not recommended before 1 year. Now, when you talk about he allows, okay, fine then, Sonali. Now, you are saying that you are latching him regularly. That means I have milk supply increase. Yes, you can increase your milk supply, but also follow the other techniques as well, which I have given. So you have to follow all the things, work for 1 week and see. If it is working, it's very good. If not, please come back to us, have a proper one-on-one consultation. We'll plan a proper plan for you. Meenal, thank you so much for the help, ma'am. Now my mind feels very sorted after listening to you. Very good, Meenal. I'm so proud of you. Just keep moving, girls. So that's good. Now I don't see any more questions. So that's very good. You all can keep coming on these Q&A sessions. It's very good that you all are getting help here and you are feeling confident about all these sessions and all these things. That's very good. So let's end the session today. So that's all for today and we'll see you again next Friday. Take care. Bye-bye. Sonali, thanks, ma'am. Most welcome, bacho. And take very good care and God bless you all. Bye-bye. I was feeling very low, but now I'm feeling positive. Thanks, Jagrati. Most welcome, Jagrati. Bye-bye.